Okay, so let's continue our lecture. We were discussing about different ions. So cations are formed when atoms lose electrons from their outermost shells. And always remember, cations always have positive charge. So this is the definition of cation. An atom or group of atoms having positive charge on it is called cation. You have to learn this. And this is how cation formation takes place. यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसी तरह कैल्शियम में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए आउटरमोस्ट शेल से तो क्या होगा, कैल्शियम पे 2+ चार्ज आ जाएगा. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ आयन इज एनाइन. हाउ कैन वी डिफाइन एनाइन? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन. इनके टाइम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज. Anion is formed by the gain or addition of electrons to an atom. Cations में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे आउटरमोस्ट शेल से, लेकिन एनाइन में उसका ऑपोजिट होगा, यानी गेन यानी एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की एटम में. यानी जब भी कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा सो क्या होगा, एट द रिजल्ट उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनाइन फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव. यानी क्लोरीन में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसमें 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और इसी तरह ऑक्सीजन में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव. फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम. एज यू कैन सी क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, सो 1 नेगेटिव चार्ज. एंड ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी, देन देयर विल बी 2 negative charge. So this summarizes our topic. Ion with a positive charge is called cation. If a neutral atom loses 1 or more electrons, it becomes a cation. अगर एक या एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स आपका कोई एटम रिमूव करता है या लूज़ करता है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अल्टीमेटली cation फॉर्मेशन होगी. एज यू कैन सी सोडियम पे पहले 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब उसने रिमूव कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, जब 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ एनाइन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. इफ न्यूट्रल एटम गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स एन एनाइन. सो ऑलवेज रिमेंबर 2 थिंग्स. cation में लूज़ होगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एनाइन में जो एटम है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. Now there are different types of ions. A monoatomic ion, as its name shows, mono means single या one. A monoatomic ion contains only one atom. यानी ऐसा ion जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम होगा, that is called monoatomic ion. As you can see, sodium, chlorine, calcium, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, तो ये एक ही टाइप के एटम हैं और इन्होंने क्या अपने ऊपर चार्ज को कैरी किया हुआ है. सो दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक आयंस. अ पॉलीएटॉमिक आयन कंटेन्स मोर देन 1 एटम. इन 2 या 2 से ज़्यादा जब भी एटम्स प्रेजेंट होंगे देन दे आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस. एज यू कैन सी OH combines to form हाइड्रोक्साइड आयन और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. सो दीज आर OH and Ca negative is the example of anion because they have negative charge, and NH4 positive is the example of cation because it has positive charge. Now what you have to do, you have to learn these question answers. What is an ion? What are the types of ions? Give examples. Ion is an atom or group of atoms having a charge on it. The charge may be positive or negative. There are 2 types of ions, cations and anions. An atom or group of atoms having positive charge on it is called cation. The cations are formed when an atom loses electrons from its outermost shell. So basically वही आंसर है जो अभी हम सारा पीछे से डिटेल में पढ़ के आए अपनी प्रीवियस वीडियो में. Now you will write these equations के फॉर्मेशन कैसे होगी. Then you will write the definition of anion. An atom or group of atom that has a negative charge on it is called anion. An ion is formed by the gain or addition of electrons to an atom. For example, Cl negative and O2 negative. Following examples show the formation of an anion by the addition of electrons to an atom. So now moving towards the next topic, which is difference between atoms and ions.